तो हेलो, कैसे आप सब। मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं इंडियन एनिमे गेमर्स। और आज भी हम खेल रहे हैं गेंशिन द इम्पैक्ट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। अगर नहीं देखा तो पहले जाइए आई बटन पे फ्लैश और आगो से पहले जाके वॉच कीजिए, फिर आके इसे देखिए क्योंकि उसके बाद का गेम प्ले। और अगर आपको किसी को पता है कि ये क्या चीज़ है तो प्लीज़ हाँ मुझे बताइएगा। ये व्यू पॉइंट यहाँ का अनलॉक हुआ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए उसे वॉच कर लीजिए। बहुत मज़ा आया पिछला गेम प्ले में, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। वहाँ पर मुझे काफ़ी सारा मिशंस कंप्लीट करना पड़ा, खोजना पड़ा बहुत कुछ। और अभी मुझे जाना है, कहीं ऊपर जाना है। वहाँ पर मुझे इस नॉट टू लाइक किस जेड को रखना है वहाँ पर। मुझे नहीं पता वो जगह कहाँ पर है, बट अभी मैं सीधा सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ। अगर मुझे आसपास तो दिख रहा है, मार्ग ज़्यादा दूर में नहीं है, वो थोड़ा बहुत आसपास ही है। तो घूम फिर के फिर ऊपर चलते हैं। फिर चल भाई, गिर मत जाना। इतना ऊपर आने के बाद अगर गिर गया यहाँ से तो कुछ ना होगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा चढ़ के सारा सीढ़ियों को। चढ़ यहाँ से जंप, आगे चलते, चल आगे। अब फिर से जंप, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, हाँ चढ़ गया, बहुत खूब, सही है, एकदम सही। मुझे आगे ही जाना है। तो अगर मैं यहाँ से सीधा उस दीवार पे जंप करूँ तो शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, इसीलिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। घूम फिर के जाने का ट्राई करते हैं। हाँ वैसे मुझे शायद दीवार के ऊपर ही जाना है, बट पहले मुझे इन सब के ऊपर चढ़ना पड़ेगा तभी मैं यहाँ से जंप लूँ। अगर मैं वहाँ से चढ़ने की ट्राई करूँ तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। वहाँ पर एक बैरियर टाइप कुछ है, थोड़ा सा उभरा हुआ, तो वहाँ से मैं गिर जाऊँगा आसानी से। अपना स्पेशल पावर का यूज़ करने का नाकामयाब कोशिश। मुझे लगा ये सामने बनेगा, बट वो तो क्रिस्टल नीचे बन गया। कोई नहीं, चल चल देखता, अभी तो ऊपर ही जाना है। यहाँ से जाओ तो मैं शायद गिर जाऊँ, वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा। फिर से ट्राई करते हैं, और नहीं, गलत जगह पर, गलत जगह पर, बेहद गलत जगह पर। पहुँचने का चांस ही नहीं है, मुझे ऊपर पहुँचना है। बट इस बार शायद हो जाए। हाँ इस बार सक्सेसफुली ये बन गया। चल ऊपर। अभी ये भी ऊपर नहीं, मैं इसके ऊपर ऐसे नहीं चढ़ पाऊँगा, मुझे अपना स्पेशल पावर का यूज़ करना पड़ेगा। चल, हाँ ये भी बन गया। ऊपर चलते, अब शायद मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। मैं पहुँच गया एकदम ऊपर। अभी मैं आसानी से दीवार के ऊपर चढ़ सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओह फाइनली मैं पहुँच गया। अब नॉट टू लोकेस जेड को यहीं पर रख देना। ओके ओके चल, हाँ यही वाला प्लेस है। इसी जगह पे मुझे रखना है अपने खजाने को, ट्रेजर को, जो थोड़ी देर पहले मैंने ही पैसा देके खरीदा था। We can leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see child. उसका भी पैसा मुझे ही देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो पैसा लाया नहीं है, सब पैसा मेरे से ही खाएगा। यही है ना, मुझे पता है यार। Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes. I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liu Chising have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. Also, the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? I mean, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो रेक्स लैपिस है वो मारा जा चुका है, इसी ने तो उसे मार दिया। और अभी भी जो मर्डरर है उसे खोज रहा है पूरा यहाँ का पुलिस, जो कि ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रहा है, मिल नहीं रहा है उसे। मुझे बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, मतलब अजीब टाइप का लग रहा है कि ये सब कुछ एविडेंस ये सब मिलने के बाद भी उसे अब तक ढूंढने में असफल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue.
which is to say the only mint into that. All the mora that flows throughout the world is minted there. Oh, no! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. But why do you know this, Mr. Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event. As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives. But this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. तो भगवान को यहाँ के मतलब जो एडेप्टाई को चढ़ाने के लिए कुछ खास प्रकार के फूलों का यूज़ किया जाता है। उस फूल से सेंट बनाया जाता है, उस सेंट का यूज़ किया जाता है। पता है बहुत अजीब टाइप का, बट हाँ यही होता है यहाँ पर। मुझे अभी जाकर उन फूलों को ढूंढना है। मतलब जोंगली को उस प्लेस के बारे में पता है, मुझे भी अभी लोकेट कर रहा है, सामने ही है। अभी वहाँ पर जाएंगे और जाके पहले चेक करेंगे कि ओके पहले ये मुझे चेस्ट मिल गया, बहुत हार्ड है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर एक चेस्ट भी हो सकता है, अचानक ही मिल गया, सही है। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे उस फूल का मतलब शॉप ओनर के पास जो ये फूल बेच रहा है। मतलब ये बोल रहा कि बहुत ही खास प्रकार के फूल होता है जो सिर्फ भगवान को ही चढ़ाया जाता है यहाँ पर। तो कुछ तो स्पेशलिटी होगा इस फूल में। तो जाएंगे, जाके चेक करेंगे कि कौन सा फ्लावर है, ये वाला है क्या। नहीं, यहाँ पर तो मुझे नहीं ये फ्लावर शॉप का नहीं है, ये गलत जगह पर आ गए शायद। बात तो यहीं पर कर रहा है बट ये वो फ्लावर शॉप वाला नहीं है। मेरे एकदम नीचे होगा, तब मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा शायद उड़ के, अगर पानी में ना गिरे तो वही अच्छा। हाँ यहाँ पर जगह है एक जाने का, और वो मार्क भी सामने करे इसके पास। चलती से बात करते हैं कि यही फ्लावर बेच रहा है ना। हाँ सही है, एकदम सही जगह पर आए, इस बार सही जगह पर आए। ए बॉस, Silk सिल्क फ्लावर मुझे लेना है। certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again. Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his भाई servants. का इज्जत डुबा दिया पाइमन Please तूने। refrain बोलने कौन बोला from था any further यार, attempts to इसका मतलब contribute. हम लोग सर्वेंट नहीं है। देख इसके साथ काम कर रहे Please हैं peruse at your ताकि रेक्स leisure. फ्लैपिस को जो हुआ है Do उसको let me भेंट चढ़ा know if सके you अपना have any फूल further thoughts. सेंटेड फ्लावर, Silk flowers ताकि उसे अच्छा exhibit लगे। different मुझे पता नहीं properties क्या होने based वाला, on बट how their स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the adepti.
Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every सच corner. में यार जोंगली को तो बहुत ही कुछ पता है सिल्क फ्लावर के बारे में, बारे में। और देख ले भाई, इसने हमको फ्रेंड बोला, ट्रैवलर फ्रेंड। अगर इसके बाद तूने अगर सर्वेंट बोला तो देख, मेरा तलवार और तेरा गर्दन, याद रखियो। एक ही शर्त पर सब कुछ खरीदेंगे अगर तेरे पास पैसा हुआ तो। मैं इस बार पैसा नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं देने वाला। आई होप कि तूने पैसा लाया होगा। तू पता है तू बहुत ज्यादा अमीर है, बट मैं नहीं हूँ ना यार। देख तू स्टैंडर्ड हाई है बट मेरा थोड़ा लो है, बट पैसा मेरे पास रहता है, तेरे पास नहीं रहता है। सोच समझ कर बोल, पूरा मैं नहीं लेने वाला। Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any mora on you? मैंने बोला था ये फिर पैसा नहीं लाएगा, मेरे से सब पैसा कटवाएगा। बोला था यार। If I may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe we can find some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? ये तो मुझे ये फूल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं लगा, मतलब सच में इस बार एक भी पैसा नहीं लगा। जो जोंगली है वो इस बार भी पैसा नहीं लाया, मुझे पता तो वो ऐसा ही करेगा, पैसा तो लाता नहीं, सिर्फ अमीरी है उसके पास, बस पैसा तो कभी नहीं लाता और बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते रहता है। तो वो सब बातें साइड में रखकर अभी हम लोग चलते एक परफ्यूम लेडी, मतलब जो लेडी परफ्यूम बनाती है उसके पास। बोल रहे कि मुझे अभी तो आगे ही जाना है, मुझे जाकर बात करना है उन लोगों से जिसके पास अच्छा सेंट कर रहा हो, मतलब जिसका शरीर से। तो ऑफ कोर्स ये लोग सेंट का यूज़, परफ्यूम का यूज़ कर रहा होगा, तो उनसे पूछेंगे कहाँ से ये परफ्यूम तुमने बनाया और ऑल दैट, यही सब पूछने वाले। और क्या, मेरा लोकेशन एकदम सामने है,
इससे बात करते चल, और बात करके पता करते क्या है। लैन, मिस लैन। Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Qingxing flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Qimei. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. तो यहाँ पर एक लड़की है जो भविष्य बोलती है। मुझे उससे जाकर बात करना है और पता करना है कि तुम्हारे पास से इतना अच्छा स्मेल सेंट कैसे करता है। मेरे वो एकदम नीचे ही है, उससे जाकर बात करते हैं और पूछते क्या है सेंट का राज। Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Perfume? I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yingar? Oh, as in scent of spring, Yingar? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. इतना भी मैं ट्राई कर लो ये हिंग हिंग यार, ये मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो अभी मुझे पता चला कि एक फैमिली है जो होममेड परफ्यूम बनाती है। वो किसी भी मतलब मशीन के द्वारा बनाए गए परफ्यूम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुझे अभी जाना है, उसे ढूंढना है और पता लगाना है कि कैसे तुम बनाती हो। ऑफकोर्स मैं उसी से बनाने वाला हूँ क्योंकि उसका होममेड परफ्यूम बोरा के सबसे बेस्ट होता है। तो रेक्स लैपिस जो यहाँ का गॉड है उसे चढ़ाने के लिए वो परफ्यूम सबसे अच्छा रहेगा। चलते उसे ढूंढते। अभी पता तो नहीं है मुझे कहाँ पर जाना है, वैसे लोकेट आगे कर रहा है, शायद यही वाला है। हाँ यही है, मुझे इससे बात करना है। चल बात करते हैं और बताते हैं क्या सिचुएशन है। इसे कैसे पता है कि हम लोग आने वाला है? You know we were coming. क्या कोई जासूस शायद मार्केट में घूम रहा होगा? वैसे लड़कियों को सब बात पता चल ही जाता है, कितना भी छुपाने का ट्राई क्यों नहीं कर लो। पता नहीं बट कैसे इसे पता चल गया कि हम लोग आने वाले हैं वो परफ्यूम के मैटर में। तो चल इससे बात करते हैं उसी बारे में। Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind मुझे would you 3 like? सिल्क फ्लावर से परफ्यूम बनाना है। पता नहीं है कौन सा सिल्क फ्लावर सबसे अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज तू तीनों को बना दे। हाँ रेक्स लाइविस के लिए मुझे बनाना है प्लीज। हाँ After all, you're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition. Is that it? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant.
but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? Where is that? Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min restaurant. ये लड़की कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों, बट चलते हैं। अभी मुझे जाना है वांगली रेस्टोरेंट। शायद शोंगली भी यही से था। हाँ, मुझे पक्का पता है कि शोंगली जो है, जो मेरे पास अभी है वो कैरेक्टर शोंगली, वो भी वांगली रेस्टोरेंट से ही है। वो यहाँ का मतलब लियो का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में गिना जाता है। इसके अंदर है, तो यहीं पर मुझे बनाना है। ओके, चल बनाते हैं। कुछ सामग्रियाँ लर्न सब पढ़ लेते हैं। यार शेफ मैन से बात करते हैं। और नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बट अभी तो मुझे इससे बात करना है। चल इससे बात करते हैं और मुझे यहाँ पर बनाना है, तो बना लेते हैं अपना सामान। We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. दिखा, मैंने बोला था ये इरादा ठीक नहीं है। अभी ये मुझे कुछ पानी लाने के लिए बोल रहे। उसके पहले तो इसका बोलने का मतलब ही कुछ और था। जैसे बोलते हैं डबल बात, वैसे ही बात को घुमा दिया इसने। पायमन ने पकड़ ही लिया था, बट कोई नहीं, चलता है। इतना तो फ्रेंडली होना चलता ही है। अभी मुझे बोला कुछ पानी लेके आओ, तो हाँ पानी सामने बकेट में दिख रहा है। बकेट ड्रॉ वाटर, मुझे पानी मिल गया। अब पानी में कहाँ रखा पता नहीं, कुछ पता नहीं है मैंने पानी कहाँ रखा। शायद जेब में भर लिया, आई डोंट नो इसने पानी कहाँ पर रखा। चल पानी तो मिल गया, इससे बात करते हैं। और देख ले पानी लाया मेरे लिए, पर जो करना है। Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. मुझे ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है क्या करना है। तो अभी मुझे जाना है क्राफ्टेड टेबल के पास। और इसने बोला है, वैसे इसका बोलने का मतलब दो था, तो आप लोगों को जो समझ रहे हैं, बट यहाँ पर गेम के हिसाब से इसको ये फ्लावर बनाना है इन चीज़ों से। तो चलिए बनाते हैं फ्लावर, देखते क्या क्या बनता है फ्लावर से। यही चाहिए फ्लावर, वो तीनों, हाँ इसी से बनाना है। बना डालते हैं परफ्यूम। हाँ फ्लावर से मुझे परफ्यूम बनाना। एक बन गया सक्सेसफुली, एक और बनाते हैं। ये भी बन गया। अब एक लास्ट वाला बचा हुआ है, इसे भी बना लेते हैं। और जाके उसे बता कि देख मैंने तीनों बना लिया, तूने जैसा बोला था मैंने वैसे ही करके तीनों बना डाला। चल तीनों नया सामान मेरे पास आ चुका है। अब चलते फिर से मोहतरमा के पास और जाके बोलते हैं मैंने बना लिया परफ्यूम, देख कैसा है। Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All three perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment.
You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. इस मोहतरमा ने बोला मुझे कि अगर तुम्हें कभी भी टाइम मिले तो तुम मेरे पास आ सकते हो बातचीत करने के लिए, बट इसका बातचीत करने का इरादा तो नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। अभी मुझे जाना है जोंगली, हाँ वो उसी के पास। मैं वो है द स्टैचू ऑफ द 7, यहाँ के स्टैचू के पास, उसके सामने ही एकदम सामने है। टेलीपोर्ट सीधा करते हैं और चलते उसके पास, बताते कौन सा परफ्यूम का क्या काम है। वैसे बताया तो इसने कुछ कि मैच्योर वुमेन के लिए ये है, चाइल्डिश के लिए ये है, कुछ ऐसे ही बताया, बट देखते हैं वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि गॉड को कौन सा पसंद आता है। देखेंगे, जोंगली से बात करके परफ्यूम का यूज़ करेंगे, फिर अपना मिशन नहीं पता क्या होगा, कंटिन्यू होगा या फिर यहीं पर ख़त्म होगा। चल, इसे मैंने दे दिया परफ्यूम, अब यूज़ किया इसने और कुछ तो हुआ यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार। देखते क्या क्या होता है। Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist, and it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Qixing can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the 2 of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why is he gotta be so secretive this time? ओके, तो हमारा ये भी मिशन कंप्लीट हो गया। हमने ये भी अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। जोंगली ने अभी मुझे एक जगह बोला, मुझे वहाँ पर जाना है और उस बेल को खोजना है। अगर आपको मेरे पिछले इसके बाद वाला वीडियो देखना है तो मेरे साथ जुड़िए रहिए। अरा सायोनारा, आज के लिए बाय बाय।